ओके, सो इस वीडियो में हम पाइथन के 500 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग से। आप सोच रहे होंगे कि हम बेसिक से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर से हमने लिस्ट या लिस्ट, टपल, सेट्स, ये सब के क्वेश्चन प्रॉब्लम पहले क्यों सॉल्व नहीं किए, डायरेक्ट स्ट्रिंग पे क्यों आ गए। थोड़ी स्ट्रिंग पहले हम स्ट्रिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अदर टॉपिक्स देखेंगे। स्ट्रिंग में हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए सबसे पहले हम स्ट्रिंग के क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। ये सभी हम 500 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 10 और 15 डेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is our first question problem. Count vowels in a string. Okay, तो हमें vowels को count करना है एक string के अंदर. Okay, so let's move on to VS Code. In this basic string programs, we create a file for count vowels .py. Okay, this is our file name. You can write your file name as you want. Okay, so this is not mandatory to write count vowels. Okay, so first we write our program count vowels in a string. Okay. Okay. So def count vowels as हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे इसके अंदर, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी आर्ग्यूमेंट, दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट, दिस इज अवर पैरामीटर। def count vowels as colon. Okay, so first we take some vowels, so take vowels equal to A, E, I, O, U, and capital also A, E, I, O, U. Okay, so these are our vowels, and use count to store all of these counts, and use for loop for ch in s if ch in vowels count plus equal to 1, and return count. Okay, after that we will take a text name is hello world 1 2 3, या जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। देन प्रिंट vowels colon comma count vowels मेथड फंक्शन यूज करेंगे। देन this text, you can also write here your text in a string without using this. Okay, so let's run our program. So vowels 3, it is counting 3 vowels in this string. Okay, E, O, and O. So these are 3 vowels. You can also add some vowels, and let's check how many vowels are there. Okay, world map. Okay, run again, and let's check how many vowels are there. There is 5 vowels. Okay, so we have added 2 more vowels in this string. Okay, so this is our program to found how many vowels are available in our string. Okay, so count vowels through this program. Okay, so thanks for watching this. We will continue our next program in our next video. Okay.